Now first, welding. Welding is the simplest procedure. Everyone knows that कहाँ वेल्डिंग होता है, किस लिए वेल्डिंग होता है, everyone knows that. But किसी को आता है वेल्डिंग करना? नहीं. So in mechanical engineering, you can study these things. You can improve your skills in welding. Now how to do that? Which tools you have to use? All these things we can learn here. Now next is fitting job. अब fitting job मतलब क्या है? To cut the any metal piece, to file that piece, to fit the exact fits. These all things we can study in the fitting jobs. Next skill we can improve by studying the wooden joints. Now in this, what we are going to study? We are going to study the carpentry job. Carpentry job मतलब क्या है? जो हमारे घर में आते हैं टेबल्स बनाने के लिए, जो आते हैं डोर फिटिंग्स के लिए, वो क्या करते हैं? कारपेंट्री जॉब करते हैं. नाउ टू इंप्रूव द स्किल्स अबाउट द कारपेंट्री जॉब, वी विल स्टडी डिफरेंट जॉइंट्स एंड वी इंप्रूव आवर स्किल्स. सो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन फर्स्ट लैब. Now, in the first semester itself, we are having one more lab, that is applied science lab. Now, in this lab, what we are going to study? We are going to study different measuring of different dimensions, velocity concept, vector concept. Now, these are the experiments what we are going to study in the applied science lab. Now, for mechanical engineer, one of the important measuring device is nothing but vernier caliper. आप स्कूल में कैसे मेजरमेंट करते थे? सेंटीमीटर्स, मीटर्स, but no. In mechanical engineering, you have to measure all things in mm. अगर आपको आपके हेयर का भी डायमेंशंस पता करना है, तो we can use this device and we can identify the dimension of your hair, thickness of your hair. So इतना accuracy आपको ये देता है. Next is the same way. This is used for measuring the diameter. This is called as a screw gauge. So these things are very important for the mechanical engineer. And these things we are going to study in the applied science lab. Now next is tuning fork. Now tuning fork तो आपने सब लोगों ने देखा है स्कूल में. So where we use that? To measure the frequency, measure the resonance. So these things we are going to study in the applied science lab. Now next lab, in third semester, we are going to study the mechanical computer aided drafting. हम उसको बोलते हैं शॉर्ट में MCAD. Now in this what we are going to study? We are dealing the 3D and 2D drawing in the computer. Now if you can see this image and this image, what you can think? Is this a photo? No. These things are drafted modeled in a computer by a mechanical engineer. Now how to do these things? All these things are done in a CATIA or SolidWorks, Solid Edge software. Now in this lab we are going to study the similar kind of component, 3D components, how to draw that, how to draw those things. All things we can study in the MCAD lab. Now in the same semester, in the third semester, we are again having the basic workshop practice 2. The main objective of this lab is metal shaping and various procedures to shape the metal. Now first, forging. In forging what we do? We make a metal we heat the metal and we hammer on that and we make a shape, required shape of that metal. This is called as a forging process. Now casting process.
Now in casting what we do? We melt the metal and we pour in the required shape and we get the required shape of part. So this is the procedure where we can study in the workshop practice 2. And in third, in this image if you can see there are some boxes made up of sheet metal. Now how to make those shapes, all things we are going to study in this lab. Okay, then we come to the next lab, that is mechanical testing and quality control lab. The motto of this lab, to understand the mechanical property of metals, fluids and how to measure them. So for that we will be having the different machineries. This is called as a UTM, Universal Testing Machine. In this what we do? We take a metal, we pull that or we'll compress that and we check the strength of that metal. Next is ISO and Charpy testing machine. With this machine what we do? We measure the toughness of the machine. Now in this machine what we check? We check the hardness. Now what is hardness? What is toughness? What is strength? All those things you will be come to know. Now I'll give the example for the hardness. एक चौक ले लो, एक ग्लास ले लो और उस चौक के ऊपर एक शार्प, एक सुई या किसी से भी एक स्क्रैच करो, क्या होगा? Chalk will get scratch, but glass will get scratch? No, because chalk is softer material and glass is harder material. So how we know what hardness it have, how much hardness it have? Those all things we can check by this machine. And most of the industry have this machine. Every means wherever they do the hardness testing, there you will see this kind of machines. So ये मशीन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. अगर ये मशीन आएगी तो ही आपको इंडस्ट्री में वैल्यू रहेगी. Okay, so again in the same lab we are going to check the fire flash point of a fluid or oil, पेट्रोल, डीजल, किसी का भी आपको अगर फायर और फ्लैश पॉइंट चेक करना है तो आप इस लैब में सीख सकते हो. नाउ व्हाट इज फायर एंड फ्लैश पॉइंट? एक एग्जांपल देता हूं. अगर आप बाइक में ऑयल डालोगे, बाइक इंजन में ऑयल डालोगे, ऑयल का टेम्परेचर अगर बहुत ही बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपका इंजन बर्न होने के लिए चालू हो जाएगा. अगर वही आप रिक्वायर्ड ग्रेड वाला ऑयल डालोगे, जो कंपनी ने बोला है कि आप यही डालो ऑयल, तो वो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका फायर और फ्लैश पॉइंट उन लोगों ने पहले से ही मेजर किया हुआ रहता है. इंजन का टेम्परेचर कितना जाएगा, आपको कितने ग्रेड का ऑयल डालना है, ये सब पहले ही आपके कंपनी वालों ने टेस्टिंग किया हुआ रहता है. So these things are also important and you should know those things as you are going for mechanical engineering. Now next is viscosity test. Now what is viscosity? Viscosity क्या होता है और क्यों टेस्ट करना पड़ता है? आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. एक प्लेट ले लो घर में, उसमें एक वाटर ड्रॉप डालो और एक ऑयल ड्रॉप डालो और वो प्लेट टिल्ट करो, क्या होगा? वाटर विल रन फास्ट but oil will run slowly. It will slide slowly. क्यों? क्योंकि वाटर का विस्कोसिटी बहुत ही कम और ऑयल का विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा है. तो दिस थिंग्स आल्सो वी कैन मेजर. अगर उसको हीट करोगे, आप सेम थिंग, आप अगर ऑयल ठंडा ऑयल लोगे और उसको स्लाइड करोगे तो स्लोली जाएगा, और वो ऑयल अगर आप हीट करके स्लाइड करोगे तो फास्ट जाएगा. क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी चेंज होगी है टेम्परेचर के हिसाब से. That also we will learn in this lab. Now next, again in this lab we are going to check the angles of component. Normally स्कूल में क्या करते थे? एंगल मेजर करने के लिए आप प्रोट्रैक्टर यूज करते थे. अगर प्रोट्रैक्टर
किसी मैंने बोला कि अगर किसी आपको एक मैकेनिकल कंपाउंड दे दूंगा और उसका एंगल मेजर करो करके बोलूंगा, तो इज इट पॉसिबल बाय प्रोट्रैक्टर? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल बाय प्रोट्रैक्टर. फॉर द मैकेनिकल कंपोनेंट वी यूज साइन बार्स. तो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब हम पढ़ेंगे दिस मैकेनिकल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल लैब में. नेक्स्ट और हम पढ़ने वाले हैं कि टूल्स मेकर्स माइक्रोस्कोप. यहां हम थ्रेड्स के पूरे पैरामीटर्स चेक करने वाले हैं. दोज आर नॉट पॉसिबल बाय आर एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर. उस इंस्ट्रूमेंट से दैट इज नॉट पॉसिबल. सो वी आर गोइंग फॉर द मैकेनिकल tools makers microscope. Next, in the 4th semester we are going to study hydraulics and pneumatic lab. इस लैब में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, जो भी हाइड्रोलिक रिलेटेड मशीनरीज है such as turbines, pumps, venturimeter, orifice all those things we are going to learn. आपके घर में भी हाइड्रोलिक मशीनरी है, कौन सी पता है? मोटर, water pump, sorry. Now what are those, how we are going to study? I'll tell you. This is turbine, Kaplan turbine. यहाँ क्या करते हैं, हम पूरे टरबाइन की स्टडी करते हैं. टरबाइन में फ्लूइड कैसे जाएगा, कितने फास्ट जाएगा, कितनी स्पीड होगी उसकी, तो कितने लॉसेस होंगे, कितनी एनर्जी हमको वो दे रहा है, ये सब चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. Now next is a venturimeter and orifice meter. In this we are going to study the flow rate. आपको पता है आपके वाटर पंप का फ्लो रेट कितना है, कितने मिनट में आपकी घर की वाटर टैंक भरने वाली है? You don't know that. So to study those things we have to study orifice meter, venturimeter like this. Okay, then we will come to the सेंट्रीफ्यूगल पंप. आपके घर में रहेगा गियर पंप, लेकिन सॉरी सेंट्रीफ्यूगल पंप. उस सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पेसिफिकेशन पूरी की पूरी स्टडी करने मिलेगी आपको यहां. नेक्स्ट, नाउ दिस इज द न्यूमेटिक किट. नाउ इन न्यूमेटिक किट nowadays it is a very much used in all fields. Now how to use those things, what are these things, what are cylinder, what are piston, what are control valve, all these things we are going to study in hydraulic and pneumatic lab. Very interesting these topics are. Then we'll come to the machine shop. In this we are going to study how to shape the material, how to cut the material, what are procedures and what machineries we are going to use. Now everyone knows the lathe machine. Here we are going to study about the turning in the lathe machine. यहाँ क्या करेंगे, आप टर्निंग के बारे में पढ़ेंगे. तो टर्निंग क्या होता है, उसको मेटल को कैसे कट करना है, कैसे आपको लेथ ऑपरेट करना है, सब चीजें आप यहाँ पढ़ सकते हैं. Then next we will come to the shaper machine. यहाँ क्या होता है, वर्क पीस कांस्टेंट है लेकिन टूल आपका मूव हो रहा है, टूल आपका रेसिप्रोकेट हो रहा है. तो इस तरह से क्या टूल वर्क पीस को कट कर सकते हो. यहां क्या होता था, टूल कांस्टेंट था और वर्क पीस घूम रहा था. नाउ द नेक्स्ट इज ड्रिलिंग. सो ड्रिलिंग में क्या होता है, आपका वर्क पीस कांस्टेंट है लेकिन टूल घूम रहा है. एंड द सेम वे मिलिंग में क्या होगा, आपका वर्क पीस कांस्टेंट रहेगा लेकिन टूल आपका घूमते रहेगा. सो ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर. आपको ये सब पढ़ना है और दिस थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मशीनरीज. Okay, then we'll come to the thermal engineering lab. The main objective of this lab is what? Is to study the IC engine. अगर आपकी गाड़ी खराब होगी तो आपको पता चलेगा आप क्या करना है, क्यों खराब हो गई है, नहीं ना. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस लैब में पूरा IC इंजन पढ़ेंगे.
So IC engine में कौन से आएंगे? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, those things we are going to study. Now similarly we are going to study the bomb calorimeter. आपको पता है पेट्रोल जलाने के बाद कितना एनर्जी दे रहा है आपको? अगर आप केरोसिन जलाएंगे तो कितना एनर्जी मिलेगा? आप अगर आप वुड जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे तो वो कितना एनर्जी देगा? That we don't know. To understand this concept, we are going to study the calorimeter. The next is air compressor. Now here we are going to study every single component of air compressor. So these are the labs what we are going to study in the mechanical engineering. Thank you. So to join, sorry sir.